Dear viewers and my dear students, Assalamu alaikum. Myself is Muhammad Hussain, lecturer in environmental science. So today we are going to discuss our syllabus of 12th class, in which we are today discussing the 4th unit, that is solid waste and hazardous waste management. So first of all, today we are talking, the first topic of the unit 4th is solid waste sources, generation and impact. तो आज हम सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं, इसकी सोर्सेस, वेरियस सोर्सेस, कहाँ से कैसे जनरेट होते हैं और इसकी इम्पैक्ट स्पेशली ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, इस पे क्या इम्पैक्ट्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे. सो आप बेटर जानते हैं कि वेस्ट जो जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ human activities. Generally, there are three types of the waste. One is the solid waste. Second one is the liquid waste. And third one is the gaseous waste. In fact, ये सारे वेस्ट ख़ास तौर पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा जनरेट होता है, जो आज मॉडर्न लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जनरेट होते हैं. आज हमें डिस्कस करना है सॉलिड वेस्ट को, दैट इज़ द वेस्ट दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. सॉलिड फॉर्म में जो वेस्ट आते हैं उससे हम आज डिस्कस करेंगे. सॉलिड वेस्ट के कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट सोर्सेस हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट सोर्सेस. म्यूनिसिपल वेस्ट, municipal solid waste. Municipal solid waste, the waste comes from especially the household, the shops and hotels, and other sources in the urban areas like the institutions, and the various commercial units. The first source of the solid waste is municipal waste. Municipal solid waste, which is one of the important solid waste throughout the world, especially the urban areas. This waste is comprised of the composition of, especially a typical waste like in India. The typical composition of this municipal waste contains organic matter, or we can say that compostable waste, that comprises of the vegetables and leaves, like the food waste, etc.
etc. Most of the Indian municipal waste comprised of, particularly when we talk about the percentage of the weightage of the total municipal waste, these combustible waste comprised approximately 60 to 65% of the total waste. 60 to 65% of the total solid waste. Another important part of this municipal waste is recyclable waste. Recyclable waste, which are comprised of the glass, metals, or the plastic materials that can be recycled, etc. So these are the important component of these municipal solid waste. The waste generation, particularly this municipal waste, varies from 2.75 kg per capita per person, 2.75 kg per capita per person, in 2.75% to 4 kg, approximate 4 kg, the waste generation is per capita per person in developed countries, in especially developed countries. Whereas in the developing countries, it varies from 0.1 to approximate 0.5 kg per capita per person per day. Yes, it is per day, per person per day in the developing countries. In the developing countries, right? So जैसे हम देख रहा कि जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसके अंदर जो ख़ास तौर पर इंडियन कंट्री के अंदर या इंडिया के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जिसकी ज़्यादा जो मैटर जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है ऑर्गेनिक मैटर, दैट मीन्स द डिकम्पोजेबल थिंग्स, यानी जो चीज़ डिकम्पोज होते हैं, राइट? यानी ये 60 से 70% है. इसके अलावा यू हैव द अदर वेस्ट जो रिसाइकलेबल है. कुछ चीज़ें जिसको हम दोबारा से रिकवर कर सकते हैं या रिसाइकल करा सकते हैं. बट देयर आर सम इम्पोर्टेंट constituents but in this solid waste that are non-biodegradable solid waste. Non-biodegradable solid waste यानी उस वेस्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंट वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो बहुत ज़्यादा समय तक हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद रहते हैं, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है दैट इज़ द पॉलीथीन,
polythene and the plastic materials. Plastic materials. So this is the pattern of the waste generation, in particularly when talk about the developed countries and the developing countries. But one thing is, you may get clear that the bulk of the waste and the composition of the waste is more important. You know, there are three main reasons that increases the waste in our environment. One is the high growth of human population, population explosion. Population explosion. One of the important reasons for the increasing of the bulk of the waste is the overpopulation growth. Second one is the industrialization. Third one is urbanization. And the fourth one is the changing of the lifestyle, that is modernization. Or the changing of lifestyle. Right? So जो सॉलिड वेस्ट है आज के दौर में ह्यूज अमाउंट में हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ते जा रहा है, उसका कुछ ख़ास कारण ये है कि एक तो पॉपुलेशन जो है, जैसे हम देख रहा कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड आज के दौर में पॉपुलेशन डबल हो रहा है. आप लोगों को बखूबी पता होगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, पर्टिकुलरली द लास्ट 200 ईयर्स, यानी पिछले 200 साल में 200 ईयर्स में ह्यूमन पॉपुलेशन 1 बिलियन से अराउंड मोर देन 7.5 बिलियन पॉपुलेशन जो है इस दुनिया में यानी बढ़ी है. तो ये शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा हमारी ह्यूमन का जो आबादी तेज़ी से बढ़ रहा है, वो एक बड़ी रीज़न है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ये वेस्ट बहुत ही ज़्यादा मकदार में बढ़ते जा रहा है. सेकंड चीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी हम सब जानते हैं कि इट वाज अराउंड दी 1750s, है ना, जहाँ पर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में स्टार्ट हुआ, जिस वजह से जाहिर सी बात है बहुत सारे इंसान ने तरक्की करना शुरू किया एंड इट काजेस मोर कंफर्ट फॉर ह्यूमन लाइफ. बट इसके साथ बहुत सारे इश्यूज भी साथ लेके आए. उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट इशू है, दैट इज़ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द बल्क ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट. अर्बनाइजेशन इज़ ऑल्सो यानी शोल्डर टू शोल्डर चलने वाले एक प्रोसेस है. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे चल रहा, वैसे ही अर्बनाइजेशन यानी अर्बन एरियाज़ की जो एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहा है. और मॉडर्नाइजेशन, जैसे ये चीज़ें सामने आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी साइंस ने जैसे प्रोग्रेस करना शुरू किया, लोगों का लाइफ जो है काफ़ी हद तक चेंज हुआ. यानी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी जो लाइफस्टाइल है काफ़ी हद तक डिफरेंट था. वी वर नॉट कंज्यूम दैट मच ऑफ द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि हम ज़्यादा इन्वायरमेंट से डिमांड नहीं करते थे. लेकिन आज क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट से अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए डिमांड कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है. तो ये एक बड़ी कारण है जिस वजह से वेस्ट ज़्यादा मकदार में और वैरायटी ऑफ द वेस्ट आर जनरेटिंग, राइट. बहुत सारे टाइप के वेस्ट जो है जनरेट हो रहा है. तो
ये है कुछ वेस्ट जनरेशन और इसकी बढ़ते हुए सिनेरियो। अब हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस, जिसमें हम एर्लियर डिस्कस किया था म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पहला जो इम्पोर्टेंट है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जिसको एर्लियर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। लेकिन ये वेस्ट समटाइम्स डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर कम से कम 30% जो है टोटल सॉलिड वेस्ट उस कंट्री के अंदर होते हैं। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है, जिसको हमने एर्लियर डिस्कस किया, दे हैव सम यूनिक फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने पहले बात किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की है, दे आर द ऑर्गेनिक वेस्ट या कंपोस्टेबल वेस्ट या ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जिसका तकरीबन 60 to 65% टोटल वेटेज सॉलिड वेस्ट के होते हैं। इसके बाद होंगे द ग्लास metals, wooden logs, cloths, sand debris, and the various this and etc. You can discuss the organic matter is one of the important constituent of the solid waste. Glasses, metals, wooden logs, cloths, sands, debris, etc. So ये सारी चीज़ें जो है तकरीबन 25 to 30% अप्रॉक्सीमेट वेटेज होंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सोर्स डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट सोर्स इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट या इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, द वेस्ट जनरेटिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, राइट। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में ख़ास तौर पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द मटेरियल्स, द particularly raw materials, or during the process or the making the goods, there are huge amount and huge variety of the waste generated from these industries. These are particularly the organic chemicals, organic chemical compounds, or inorganic salts, the acids, acid and base, or acid and alkalines, toxic heavy metals, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, यानी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज़ द हैज़र्डस वेस्ट। हैज़र्डस केमिकल वेस्ट। hazardous chemical waste and other waste such as the packing materials, or the empty cans, etc. तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो
वेरियस एक्टिविटीज़, वेरियस इंडस्ट्रीज़ के दौरा होते हैं, जिसमें बोथ दी ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स में भी फॉर्मेट। उसके अलावा ये जो एसिड्स, अल्कलाइंस, जो ख़ासतौर पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर से रिलीज़ होते हैं, टॉक्सिक मेटल्स जो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं ख़ासतौर पर जब ये फूड चेन में इंटर हो जाते हैं, तो ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। हैज़र्डस वेस्ट, ये कुछ पर्टिकुलर वेस्ट है इस सॉलिड वेस्ट के अंदर दैट हैज़ ए पोटेंशियल। हैज़र्डस वेस्ट जो कि खास मेजर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, पाए जाते हैं, जिसके अंदर ये पोटेंशियल होते हैं दैट कैन कॉज हेल्थ डैमेजेस, यानी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हेल्थ के लिए भी हो सकते हैं और इन्वायरमेंट के लिए भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दी कार्सिनोजेनिक मटीरियल्स, कार्सिनोजेनिक सबस्टांस, कार्सिनोजेनिक सबस्टांस दैट मे कॉज द कैंसर, राइट। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स इन वेस्ट के अंदर होते हैं जिनके साथ एक्सपोज होने से वेरियस टाइप ऑफ द कैंसर्स में कॉज, राइट। इसके अलावा पैकिंग मटेरियल्स, जैसे कि जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रहा है, पैकिंग मटेरियल जो का अमाउंट और भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे पास, वो है माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन। माइनिंग एंड क्वारिंग। माइनिंग एंड क्वारिंग में जो यानी जो हमें इम्प्योरिटीज़, ख़ासतौर पर जब माइनिंग करते हैं किसी भी और का, उस समय ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉप सॉइल, ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉप सॉइल वहाँ जनरेट होते हैं, टॉप सॉइल यहाँ पर जनरेट होते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट, द सॉइल, द इम्प्योरिटीज़ जो इस ओर के अंदर पाए जाते हैं, इम्प्योरिटीज़ जिसमें बहुत सारे टॉक्सिक हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, हैवी metals. You can have also, particularly when you are mining the radioactive substances like uranium, radioactive substances जो और भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ह्यूमन हेल्थ के लिए होते हैं, राइट। सो these are some industrial activities जहाँ से इस तरह की वेस्ट जनरेट होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सोर्स इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चरल activities. This source of the waste is particularly important in the rural areas where the growing of the crop takes place, and particularly the waste generating from the crops, use of the crops and growing of the crops, and also the cattles, domestication of the cattles may produce some important solid waste in the form of the slurries, agriculture slurries in the form of cow dungs, crop residues, and some residues of the pesticides, and their packing materials, and empty cans. So next time we will discuss further the sources of the solid waste. Right. Thank you.